Okay, so here we're gonna have to start our session. So class, what would be the thing we have to start today? We have to start our fourth family, I think, for today. And yes, it named to be as family Mimosas. As we know very well, we said about for Rosaceae that happened to be as rose family, Solanaceae which happened to be as potato family, and Fabaceae which happened to be as pea family. But if I'm talking about for Mimosas class, that Mimosas happened to be as Acacia family. That Mimosas, if you're gonna have to elaborate it, it happened to be as for Acacia family. Now what is Acacia family? देखो हमें रोज फैमिली समझ में आता है, हमें सोलानेसी में पोटैटो फैमिली समझ में आता है, हमें फैबेसी में पी फैमिली समझ में आता है. But now what is that Acacia meant to be as? So remember that Acacia, the word we derive from Acacia would be so many generic name of so many organisms we have to include in this family. Just for example, if I'm including one of the finest thing we're gonna have to include in that, which we're gonna have to remember that. Have you ever heard the word कत्था? क्या तुम लोगों ने कत्था सुना है कभी? Yes class, have you ever been heard कत्था सुना है तुमने? Just inform me on your chat. No, कत्था नहीं सुना तुमने? जिसने सुना है, किसी ने सुना है तो वो मुझे बताए, या नहीं सुना तो मुझे इसी तरह आंसर कर दें. Okay, so why we are using कत्था? Where is that कत्था would be used? कत्था कहाँ यूज होता है? तो कत्था यूज कहाँ होता है, कहाँ करते हो यूज? where we use कत्था, या हाँ पान में लगाते हैं. Exactly right. That is the thing which we use in pan. But remember that कत्था we are also used for the dyeing agent. हम किसी भी चीज़ को डाई करने के लिए, कलर करने के लिए भी कत्था यूज करते हैं. It's a good absorber, it's a good color producing agent. It would be used as a dyeing agent. कत्था जिसको हम बोटानिकली मिमोसेसी का एक बहुत ही फाइनेस्ट ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं याद रखने के लिए, एंड दैट नेम टू बी एज अकेशिया कटेचू. That happened to be a katha plant, which we cannot say that it will be used in pan, but we can say that it will be used in dyeing agent. Dyeing agent, जितने भी हमारे dyeing agent हैं या जितने भी हमारे dyeing processes के लिए जितनी भी चीज़ें यूज होती है, कत्था is one of the thing which can be used. और one more thing if I gonna tell you, except regarding about for the book, that कत्था would also be used as a tincture. जितने हमारे एंटीसेप्टिक होते हैं उसमें भी कत्थे को हम यूज़ कर सकते हैं टिंचर के तौर पे, एंटीसेप्टिक के तौर पे. तो येस इट हैव वेरी गुड इम्पोर्टेंस, as compared to the book we're gonna have to write that it would be only used in dyeing agent. We don't have to say that we use in pan. It is certainly good for digestion. We don't have to say that. We just have to say that katha is a certain thing which we use for dyeing agent. And in that Mimosas we use we just use this organism. It will be the finest organism to remember. कि Mimosas क्या है? Acacia family. Oh, what is that Acacia family? In which we include the katha plant. What is that katha plant? It happens to be the Acacia category. Okay, but before starting one of the things, class, अच्छा पहले एक काम करते हैं, हम टॉपिक को थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं, and after that we're gonna have to ask you a certain question regarding your previous lectures. Okay. So the first ever thing I gonna have to write for any of the family, that is somewhat as floral formula. So for getting 1 mark, you're gonna have to write about the floral formula, and you're gonna have to see what would be the difference regarding the floral formula. You have to see. So regarding about the floral formula, the thing which we're gonna have to remember is a very first thing we're gonna have to write over here. A very simple formula we have: heteromorphic, bisexual, I think calyx will be 5, fused, 5 free, I think. Corolla, it would be, as you see it, evolution and condition.
I'm talking about for this, okay, that is only 5 fused, corolla 5 free or 5 fused. Androecium infinite or 10, and it would be 10. Okay, androecium 10 and 1. So that is the mode of thing which we have regarding our part for memosis. Okay, so that is the mode about for fluorine formula. As you can see, the fluorine formula would be quite easy to remember. So that's the thing which we have. It would be actinomorphic, bisexual, calyx 5 fused apples, corolla 5 free or 5 fused, androecium 10 or infinite or 10, or it would be infinite or 10, or magnesium would be free monocouplet. So that's a certain formula we have. And now if I'm talking about a part for, we're gonna have to write about its floral character. So floral character हमारे पास क्या क्या है? So you can have to see it over here. About for floral character. Now about a part for floral character. Floral character में हमारे पास है ये चीज़ें आती हैं. So the very first thing which we're gonna have to write about for floral character, that is its inflorescence. Okay, that is the inflorescence which we're gonna have to write over here. And about for inflorescence, देखो उसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ इस तरह से लिखी हुई हैं, that we're gonna find about a word that is called spike and umbel. ठीक है, तो ये दो चीज़ें तुम लोगों को इसमें मिलेंगी, spike and umbel. And I'm gonna have to tell you that this inflorescence, in which we include racemose, that spike and umbel would be the type of racemose. ये spike और umbel जो है ये racemose की type है. If I'm talking about for spike and umbel, you can see that these are the two words you can found on inflorescence. So that is spike and umbel. That is the type of racemose. Racemose having a certain type of raceme, spike, spikelet, umbel, corem, flattened, spikelet. Yes, spikelet as well. तो racemose की बहुत सारी further types है. उसमें तुम लोग इस तरह से भी लिख सकते हो. Racemose having certainly spike and umbel. That are the two types of racemose we have. तो इसको इस format में भी लिख सकते हो. It would be real easy for you to write that thing. Okay. And now next what we have class, we're gonna have to say about for flower. So let's see about for flower. Okay, if I'm talking about the flower, so you're gonna have to tell me about the flower. Yes, class one by one, you're gonna have to tell me about flower. That what will we have in flower? The flower would be what? What would be the thing you're gonna have to write first in flower? Yes. Indicate me on chat that what should I write first in flower? My flower palette. Yes, that is the thing which you're gonna have to write. That it is actinomorphic, it is bisexual, and you found 4 things over here. K, C, A, G. So yes, actinomorphic, bisexual. You found 4 things. K, C, A, G, calyx, corolla, androecium, gynoecium. So class. By the presence of this KCAG, the flower reproduction is complete. Complete कह सकते हो. They are bassetate. Bassetate means it have a certain covering around it. वो जो आपको floral formula में indicate नहीं किया गया, लेकिन आप ये part लिख सकते हो. Pentamerous का point लिख सकते हो कि it have the 5 sepals and 5 petals. So that is a certain point you're gonna have to write. And now let's see that how we're gonna have to write it. Very first thing we're gonna have to write that it is actinomorphic. Next thing which is being bisexual. Very next thing which is being complete. Actinomorphic, bisexual, and yes, it is being complete. And now next we have to say that it is pentamerous. Why we are saying about for pentamerous? Because calyx and corolla would be 5, 5, 8. तो इसको हम pentamerous structure कह सकते हैं. So that's about, I think, enough for the flower. And now next what we're gonna have to go about for each calyx, corolla, androecium, and gynoecium. So let's talk about a part for calyx and corolla. So make it as quick as possible, class.
अब मुझे बताओ कैलिक्स, व्हाट यू सीन फॉर कैलिक्स, हाउ यू गोना राइट फॉर कैलिक्स, ईच वन यू गोना हैव टू इंडिकेट मी ऑन चैट, मुझे चैट में इंडिकेट करो हाउ यू गोना हैव टू राइट अबाउट फॉर द कैलिक्स. Five few sepals, five pollen. सही से indicate करो that is not a thing which you can have to indicate. Yes, it is a 5 few sepals. What we call it 5 gamosepalous. That is being very right. That it is 5 gamosepalous. 5 gamosepalous, and you can write it one thing that meant to be as for fused sepals. And now about for next we have got a part for corolla, and for corolla the things you can see right here. Corolla, numerous stamens, numerous fine stamens we have to see. Numerous stamens, or that is 10 under bracket, what we can call it class. Corolla में मैंने एक चीज़ लिख दी, that is the numerous stamens. What we call that? How we call that? That is a certain term. What we call that class? इस term को क्या कहोगे? Just you can indicate me on chat as quick as possible. Okay, sorry. That is a certain thing which I have to be That is a certain thing for endosperm, and I'm gonna have to indicate in corolla. So sorry for that, but we're gonna have to indicate for this. So yes class, about for corolla, just indicate me about for corolla. मुझे corolla को बताओ. It's been my mistake that I just indicate you endosperm over there, but just tell me about for corolla. Corolla के बारे में बताओ क्या होगा corolla. How we gonna have to write it? Then indicate me as quick as possible. Yes, it is 5 polypetalous or 5 gamopetalous. इसको ऐसे से लिखोगे 5 polypetalous or 5 gamopetalous. 5 polypetalous or 5 gamopetalous. One more thing regarding corolla which we have indicated that you can found about one of the thing which is goes for aestivation. तो अगर तुम लोग के पास books हैं तो you can see onto the corolla that you found a word that's called valvate. Have you found out what word that is called valvate? So just answer me on the chat. Corolla में तुम लोगों को क्या कोई valvate का term मिल रहा है? Indicate me on your chat class. If you have no books, so you just okay. Yes. That's great. So you found a word valvate on corolla. तो valvate का एक term भी आप लोग corolla में indicate कर सकते हो. You can have to include it that aestivation. Aestivation is valvate. Now, what is that valvate? We don't have to use aestivation. देखो aestivation एक term है जो मैं साथ पढ़ाता जाऊँगा, साथ इंडिकेट करूँगा. ये लास्ट ऑफ द फैमिलीज का तुम लोग को इंडिकेट करूँगा. ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर एस्टिवेशन के ऊपर बना के तुम लोग को थोड़ा सा दूंगा. तो एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन टेल्स यू अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स. मोस्टली इट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स. ये अरेंजमेंट बताता है किसकी? पेटल्स की. तो ये there are so many types, twisted, imbricate, valvate, axillary. ठीक है ना? तो there are certain 4 types जो हम अभी यहाँ पे इंडिकेट करेंगे. लेकिन यहाँ पे जो corolla इंडिकेट किया गया है that is somewhat about for valvate. Now what is that valvate term? If you see the floral diagram of Mimosacea, अगर तुम लोग floral diagram देख रहे हो Mimosacea की, so you can see that each of the sepals and petals would be attaches together. मतलब कोई ना नीचे हो रहा है ना कोई ऊपर हो रहा है. ठीक है ना? तो जिस तरह हम लोग रोजेसी में देख रहे थे या फिर फैबेसी में देख रहे थे, तो दे हैविंग अ सर्टेनली द अरेंजमेंट जो थी वो थोड़ी सी रैंडमली डिसकंटिन्यूड थी. लेकिन अगर हम मेमोसेसी में देखते हैं, मेमोसेसी में देखोगे या फिर सोलानेसी में देखोगे, तो अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, बहुत ज़्यादा फाइन है. ये सैपल्स एक दूसरे से जॉइंट है एंड दे आर बीइंग पैरेलल. नो वन इज बीइंग अपग्रेडेड और डाउनग्रेडेड. ठीक है ना? दे आर बीइंग अटैच्ड टुगेदर एंड व्हेन द सैपल्स एंड पेटल्स आर अरेंज्ड इन अ फाइन ऑर्डर. एक फाइन ऑर्डर में सैपल्स और पेटल्स अरेंज है कि नो वन इज बीइंग अपग्रेडेड अंडरग्रेडेड. मतलब कोई एक दूसरे के ना तो ऊपर आ रहा है ना नीचे अरेंज हो रहा है. ये फॉर्मली एक दूसरे से क्या है? अटैच हैं.
ठीक है, पैरेलल अटैच हैं, एक बहुत ही फाइन इसका एक्सपोजर बन रहा है, एज यू कैन सी ऑन योर फ्लोरल डायग्राम एज वेल, अपनी फ्लोरल डायग्राम से भी आप चेक कर सकते हो। तो एक फाइन अरेंजमेंट जिसमें पेटल्स और सेपल्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो पैरेलल, सो दैट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड वेलवेट। ये अरेंजमेंट कहलाती है वेलवेट। सो दैट इज अ थिंग एस्टिवेशन। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स का पर्सनली मैसेज आया था, तुम लोगों को तो नहीं आया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि एस्टिवेशन तो पता है, तो आई डोंट हैव टू मेक अ सर्टेन थिंक कि मैं कोई अलग से टॉपिक बताता, मैं साथ साथ ही टॉपिक कवर अप करूँगा, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी एस्टिवेशन बताने की, सो आई मेक अ कंप्लीट लेक्चर फॉर दैट एज वेल। तो एस्टिवेशन वेलवेट यहाँ पे एक टर्म आया, सो आई गोना हैव टू इंक्लूड इट ओवर हियर। ये सारी चीज़ें तुम लोग के लिए प्रैक्टिकल वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे प्रैक्टिकल वाइज एज वेल। आई गोना हैव टू कवर दैट टॉपिक एज वेल। तो यहाँ पे ये याद रखो, एस्टिवेशन क्या आ रही है हमारे पास, वेलवेट, एज यू कैन सी ऑन टू द फ्लोरल diagram. तो each sepals and petals would be arranged in a certain order. तो एक certain order में arrange है, so that type of estivation, that type of arrangement of sepals and petals is called velvet. So class, if you have a certain confusion onto the velvet or estivation, you can ask me on your chat. अगर किसी को भी कोई भी confusion हो रही है, so they can ask me on your chat. जल्दी से मुझे पूछ लो कि अगर कोई मसला है तो। Yes class. Any confusion? If you have no confusion, so just say no. So okay. तो एस्टिवेशन, पहले यहाँ पे देखो एस्टिवेशन क्या होता है। एस्टिवेशन मैं बता रहा हूँ कि इट्स अ सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन की फर्दर टाइप्स आती हैं, वेलवेट, इम्ब्रिकेट, एक्सिलरी, ट्विस्टेड, ठीक है। अब वेलवेट क्या है, ये यहाँ पे वेलवेट कौन सी एस्टिवेशन है, वेलवेट कौन सी अरेंजमेंट है। तो अगर फ्लोरल डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे सेपल्स और पेटल्स आपस में एक दूसरे से फर्मली अटैच्ड हैं, मतलब नो वन इज बीइंग डाउन, नो वन इज बीइंग अप। जिस तरह हमारे पास फैबेसी में हो रहा है या रोजेसी में हो रहा था, वन इज अप, वन इज बीइंग डाउन, वन इज बीइंग अप। तो ये दैट इज़ नॉट अ सर्टेन थिंग विच वी फाउंड इन अ सर्टेन मिमोसिसी। जैसे सारे पेटल्स क्या है, पेटल्स और सेपल्स एक फर्मली अटैच हैं एक दूसरे से, पैरेलल अटैच हैं। सो दैट इज सर्टेन पॉइंट विच यू गोना हैव टू रिमेंबर अबाउट फॉर रिगार्डिंग एस्टिवेशन। वेलवेट वो एस्टिवेशन है कि जिसमें सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे से अटैच हो फर्मली, ठीक है। मतलब नो वन इज बीइंग, मतलब उसमें कोई भी हर्डल नहीं आ रहा हो, कोई भी अप नहीं हो, कोई भी डाउन नहीं हो, दे आर बीइंग अटैचेस टुगेदर पैरेलल, ठीक है। तो दैट फाइन अरेंजमेंट और फाइन एस्टिवेशन इज कॉल्ड वेलवेट। कभी जब कोई मसला हो तो फिर उससे पूछ सकती हो, तो किसी और को कोई मसला हो सो दे कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन। अगर कोई भी मसला हो यू कैन आस्क मी ऑन चैट। ओके थैंक। Okay, so let's getting started with the very next part about Phaeandrosium and about Phaeandrosium. About Phaeandrosium class, what would be the thing you're going to have to see? अब बताओ यहाँ पे तुम लोगों को क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। Now let's talk about a thing. What you're going to have to see over here, this class. Androsium. What is that thing? What is that thing? How we gonna have to write it? Okay. Yes. Numerous stamens and what we gonna write after that. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? Numerous stamens की मैंने बता भी दिया था. Numerous stamens and yes, what we call after that? Or. Numerous stamens and what we have after that. उसके बाद क्या है, क्या लिखोगे, किस तरह से लिखोगे, जैसे indicate भी on chat how you are going to write this thing, इस चीज़ को किस तरह से लिखोगे, ये चीज़ तुम लोगों ने बता दी मुझे। हाँ yes, no it's not a polyandrous. poly मतलब फ्री होता है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। poly का मतलब फ्री होता है, यहाँ ब्रैकेट है, so that is being wrong. polyandrous नहीं होगा, फिर क्या होगा ये बताओ। I told you to cover your lecture. और जब भी क्लास ज्वाइन करो पुराना लेक्चर कवर अप करके, एटलीस्ट लेक्चर सुन के ही आ जाओ, ठीक है। व्हाट वी कॉल दैट पॉलीएंड्रस रॉन्ग है। इसके अलावा बताओ, देखो एंड्रस फ्यूज्ड है, और इफ एंड्रस वुड बी फ्यूज्ड व्हाट वुड बी द टर्म वी गोना हैव टू यूज फॉर दैट। इसके लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे?
Class, indicate me on chat as quick as possible. No, we don't use the word gamo for endotium. Endotium के लिए हम gamo word use नहीं करते. We gonna use the word, yes, exactly right, sen. So yes, that is sen andrus. Numerous stamens are 10 sen andrus. Okay, now next what we have got upon, that is gynoecium. Now about for gynoecium, the thing we're gonna have to see that it is a hypogynous, and it is hypogynous, and we can say free monocarp. So there is a certain thing which we have heard about gynoecium. It is hypogynous, and what we can say it is free monocarpellary. So that is all about for floral character we have. That's all about for floral formula. The diagram of it would be quite easy, and students, I cannot get the diagram of Fabaceae on tomorrow. मुझे Fabaceae कल कोई भी diagram नहीं मिली, and I want the diagram of Fabaceae and Mimosacea today. मुझे आज दोनों की diagrams चाहिए होंगी, तो you will have to submit your diagrams of Fabaceae and Mimosacea today. मुझे आज दोनों डायग्राम्स करके दो, जैसा भी तुम लोगों को पॉसिबल लगे, कभी भी पॉसिबल हो मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है. तो दैट इज समवॉट ऑल अबाउट रिगार्डिंग द फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ फैमिली Mimosacea. दैट इट वुड बी actinomorphic, bisexual, what we can say, gamospalus, polypetalous or gamopetalous, numerous stamens or 10 polyandrous or hypogynous free monocarpellary, and it have a type of inflorescence racemose, and yes, racemose, in that racemose we have a spica number, and a certain thing which you're gonna have to remember about its aspiration, that is valvate. And I am seeing that the diagram of the floral diagram of this, it will be quite very easy, so you don't take much time for drawing that diagram, and make sure that don't make the arrangement of petals and sepals disturb petals और sepals की arrangement नहीं करना, fine करना. Fine मतलब एक दूसरे से इस तरह firmly attach हो, so that you can make through a certain astrivation which is called valvate. ठीक है, so that's somewhat about for economical importance and floral formula, and after that you're gonna have to submit your diagram to me, and now we're gonna have to make about for economical importance and botanical name. Till then कोई मसला class floral formula और floral character में तुम्हें. Okay, let's getting about part about for economical importance, and what we're gonna have to call about for economical importance. Economical importance. Acha, those students who have the new version of the book, they kindly make a certain correction कि 10 मेरी वर्जन में जो part आ रहा है, that is 10 sin andrus, लेकिन जो new version है उसमें polyandrous आ रहा है, so you will have to check that part. And now after that you're gonna have to go about for economic importance. So अगर economical importance देखते हो, so you're gonna have to see that there are the two names if you have an economical importance. तो economical importance काफ़ी short है. Yeah, it's a source of dye. अच्छा, पहले ज़रा सा देखो regarding about a part source of dye लिखने से पहले, the many trees of the family surrounding species of Acacia albizia and Xylea provide commercially a great economical importance for the construction wood. देखो, यस, कंस्ट्रक्शन शटरिंग के लिए जो वुड्स वगैरह यूज़ होती हैं, जो घर बन रहा होता है, तो शटरिंग के लिए तुम लोगों ने वुड्स देखी होंगी कि एक सर्टेन घर को स्ट्रक्चरलाइज करने के लिए हम वुड लगाते हैं शटरिंग के लिए. तो वो शटरिंग की जो वुड्स होती हैं, दैट वुड बी द वुड्स ऑफ Xylea and Acacia albizia. सो यू कैन राइट इट डाउन दैट Acacia albizia and Xylea used commercially as in construction. That is the thing you're gonna have to indicate. And now next what we have, plus certainly next thing we have, yes, the purpose, the
purpose of it will be used as for in construction and furniture. Furniture and fuel. So that is the thing which acacia, albizia and xylem used commercially as in construction and furniture and fuel. And next you can see the albizia labic. Albizia labic would also be used as in home construction. जिस location में cabinet works वगैरह के लिए हम acacia labic would be used in making kitchen cabinets. So most of these organisms which would be in Mimosacea, it would be used in under construction. It would be used in making furniture. It would be used for making the outside construction. So that is the thing which is being commercially so much importance. And now what next we have Arabic gum obtained from Acacia nilotica and Acacia senegal katha, a dye obtained from Acacia catechu. So yes, you can say that from Acacia catechu we obtained dye. ठीक है, कत्था प्लांट जिसको आप कह रहे हैं फ्रॉम अकेशिया catechu, कत्था प्लांट. From that we obtained dye. Dye for certainly for dyeing agent coloring purpose के लिए use होता है, ठीक है. And now next what we have, some gardens, some ornamental plants we have in that is Mimosa pudica and Acacia melonoxylon, and a few species of Prosopis are planted on the arid zones for breaking the wind pressure. तो ये दो points भी हैं हमारे पास. There we have Mimosa pudica, that is chewing touch me not. Mimosa pudica used as garden plant or ornamental plant के तौर पे आप देख सकते हो. And one more thing, in order to complete the 5 points, I write that a few species of Prosopis would be found on arid zone in order to reduce wind pressure. Okay. So that is a certain 5 points you can make it for economical importance. What are the things Acacia albizia and xylem used commercially as in construction, furniture and fuel. Acacia labic would be used as for making kitchen cabinets. Acacia catechu, it would be used as a dyeing agent. Mimosa pudica would be used as a garden plant, and Prosopis would be used for reducing the wind pressure on the arid zone. So that is the 5 points. You can write it down. It would be real very easy, real very quick. So you don't have to write it down. अगर उसके economical importance भी देखोगे book के तो वो भी बहुत shortly लिखे हुए हैं. But if you can make this 5 point, it would be well enough for getting the 1 marks. And now if I am talking about for the botanical names, अगर मैं botanical names के हवाले से देखता हूँ, so our first botanical name भी है. अच्छा, botanical name के साथ तुम लोग common name भी लिखोगे और जहाँ जहाँ local name given है वो local name भी आप लोग indicate करते जाओगे. So if I am talking about the very first thing, botanical name मैं यहाँ पे indicate करते जा रहा हूँ. I gonna have to read it out from the book and you gonna have to see it. Very first thing, that is Acacia nilotica. You remember that how you gonna have to spell it. Acacia nilotica, that is a common name, gum tree, and a local name, that is Pablo Kikar. The second one is Albizia labic, that is Ceres. Albizia labic, that it would be used in making kitchen cabinet. Its common name would be Ceres. तो ये तुम लोग से MCQs में भी पूछा जा सकता है. What is the thing? What would be the thing which would be used and found in making kitchen cabinet? तो वहाँ पे Albizia labic के अलावा अगर Ceres word use किया गया तो तुम लोग को पता होना चाहिए that the word Ceres we are using for Acacia labic. Mimosa pudica, that is touch me not, that is छुई मुई, छूते हो तो ये close हो जाता है. That is a certain movement, ये तुम लोग पढ़ोगे इसको regarding in chapter number 2 support and movement second year में. तो छुई मुई plant, it is a very beautiful plant which we have
मोस्टली यूज़ फॉर आर गार्डन पर्पस, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं. छूते हैं तो इसके लीव्स जो होते हैं वो कर्ल डाउन हो जाते हैं. सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर to studying the nature. And the next one is Prosopis glandulosa. The common name would be Prosopis, and yes, Prosopis glandulosa, Prosopis would be found on arid zone in order to reduce the wind pressure. Wind pressure को कम करता है ये arid zone में. And now next what we have a very last thing, that is Acacia catechu, that is the katta plant which would be used for making the dyeing. So that is all for the Mimosacea we have. So what I'm gonna say that you're gonna have to submit your floral diagram as quick as possible to me. कोई मसला क्लास लेक्चर के हवाले से